ओके स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन में हम एक न्यूमेरिकल की मदद से जो हाइब्रिड इक्विवेलेंट मॉडल है उसके बारे में जानेंगे कि कैसे ये जो क्वेश्चन है कैसे एक्सपेक्टेड है। Okay, so in this example 5.19, given IE is given, the HF, HO and HOB is given. So we need to find the common hybrid equivalent. So if we draw the model here, so we have the circle. We only consider A. Okay, in part A, so we have to find a number of things. So I draw the model here. So I think similarly we have the H of we have the H HF. R and HF. R and HF. Okay, obviously the uh, input current has to be here as well. And similarly, the output voltage should be here. The output voltage. The output voltage. So this is the hybrid equivalent model. And what we are given the three parameters, and we need to find the two more parameters. So how we find the two more parameters? So we use the RE model. So first we find the value of RE. When we get the value of RE, then we use this formula. HI is equal to beta R. So this way we find the value of the HI. And then we find the output resistance by using this formula. But because the HO is already given, yeah. So we can write here the value of HO as well. Let's see इसमें किस तरीके से इसको डायग्राम को बनाया है. और किस तरीके से जो नेक्स्ट वैल्यूज पर मालूम की है. Our we are interested to find the part A only. Okay, so part A. Okay, as you can see here in this diagram, the values are given, the HI, and similarly the 140, and the H1 over HOE 50 kilo ohms. So this is way how it draw the common emitter hybrid equivalent model by using the parameters.
इसको एक ही जगह पे देखते हैं। Okay, this is the structure. This is the given values. This is the question. Okay, now I take the calculation as well. Okay, now everything is on one page. Now we can easily understand these things. Okay, so what is given here is IE, HF, and HO. HF is given, and we can write HF right away to here, because in the original model we have to write here HFE. So it is also convenient if we can copy the model from the book, जो कि इस मॉडल इस तरीके से इन्होंने ये मॉडल बनाया है। अगर इस प्रोसेस को हम समझ लें, इट विल बी वेरी गुड फॉर अस। और मैं उसी उसी पेज के तरफ जा रहा हूँ ताकि हम इस मॉडल को ले आए। यहाँ पे दिस वन, okay, now you can see the HF value, the HF value 140. This HF value is given here. So this 140 is just placed over here. H out. So there are two ways. Either we write directly or in a other way. जिसमें क्या हम इसको ohms में convert करते हैं. That way is to take a reciprocal of this value. So the resistance will be the reciprocal of admittance. Okay. Okay. Impedance is equal to 1 over admittance. So this is one way to write the value here. 50 kilo ohms calculated through this line, and it is given here. So this value is primarily derived from this value. So we have placed these values. Then the HIE is found through this beta RE formula, and R is derived through this line. वो formula पहले जानते हैं, हम यूज कर चुके हैं. And this value 1.5456 will be placed over here. Okay, as you can see, because the HR parameter is not given, so we cannot find this section. So maybe in a question where HR is given, then we can use this model as it is. So we can incorporate this part as well. So that means the book primarily uses the approximate model. The book is using the approximate model for input side, whereas on the output side, the hybrid equivalent model is used. जी मुबशर, आपका कोई सवाल है यहाँ पे? If you have any question, ये चीज आपके लिए मुश्किल तो नहीं है? नहीं सर, सही है, प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह और ये पक्का हो जाएगा। ये जरूर जो है ना, ये जो एच पैरामीटर्स है ये इम्पोर्टेंट, ठीक है, क्योंकि डेटा शीट में ये वैल्यूज होती हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट सेक्शन है. पाई
जब हम करेंगे तो इट विल बी नॉट एज प्राइमरली इतना के ये ज्यादा इम्पोर्टेंट। ओके, आफ्टर दिस कॉमन बेस को हम नहीं कर रहे कंसिडर, but if we go through the theory and the formulas, that we can also work out the common base as well, but it is not primarily our focus is the common emitter configuration. Okay, then there is approximate model. अगर आप देखें कि ये मॉडल इस्तेमाल किया था अभी थोड़ी देर पहले, दिस इज द अप्रोक्सीमेट मॉडल। इस मॉडल से प्राइमरीली जो इससे पहले एग्जांपल थी वो की गई। तो दिस इज कॉल्ड द अप्रोक्सीमेट मॉडल। और इसमें अगर आप देख रहे हैं तो HR पैरामीटर मौजूद नहीं है, तो इट रिड्यूसेस टू 3 पैरामीटर प्रॉब्लम। No, because we have already gone through the fixed bias configuration, we can replace the transistor here to primarily come up with this approximate hybrid equivalent circuit. थोड़ा इसको करीब से देखते हैं। Okay, as you can see, the circuit is the same, but the resistance RB is now present on the left side and RC is present on the right side. So what will be happening here? जब हम Z input मालूम करेंगे, so we have to take these two resistances as parallel, and on the output side we take these two resistances as the parallel. So this way we calculate the primarily input and output impedance. और जब हम वोल्टेज डिवाइडर लेंगे तो उसमें एक और रेजिस्टेंस आ जाएगी इनपुट साइड पे, और अगर वो कैपेसिटर हम ना यूज करें तो फिर एक और रेजिस्टेंस आ जाएगी आउटपुट साइड। सो द फार्मूलाज आर गिवन बिलो एज एक्सपेक्टेड के जो है वो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस मालूम करनी है और उसके बाद गेन है, गेन मालूम करना है। सो दिस इज द फार्मूला, we know the values and we just put the value and get the answer. So this is the last question जो आज के दिन में हम करेंगे। इसके बाद आगे होमवर्क के लिए आपको कुछ एग्जांपल्स मैं दे सकता हूँ, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उन एग्जांपल्स को हम कल कर लें, because this is an important part जो कि हाइब्रिड पैरामीटर कहलाता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। So this kind of question you will be given the formulas and also the different values from the data sheet and also the formulas. So your task is to apply the formula and calculate the input and output resistance and the voltage gain. Okay. So it is very easy that you just apply the formula, and when you apply the formula you will get the result. Okay, this is the formula for the input impedance, which is just calculating the parallel resistances, and similarly the output impedance is calculating by this formula, and then we have the voltage gain and the current gain. Current gain is very straightforward, जो कि primarily beta है. So HF is directly, we can write directly the current gain, which is nothing but it's a beta primarily for common emitter. जी मुबश्शिर, आपका कोई सवाल है? ओके, थैंक यू वेरी मच। आज का हम यहीं तक रखेंगे, कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है इंशाल्लाह। हाफिज।